Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to be live for our most canonical writer, William Shakespeare. But before I go live, I want to check all the credentials that are they working fine. Let us see. Yes, very fine. Everything is going fine. And you know what? Last 10 days are left for upcoming HPSC PGT English exam. NTA नेट भी आने वाला है, LT ग्रेड भी आने वाला है यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, आई एम सॉरी. सो ये लाइव वीडियो से हम पहली बात तो ये कि विलियम शेक्सपियर क्यों कर रहे हैं. इतना शेक्सपियर भी मास्टर नहीं है जितने हम उसकी राइटिंग्स के मास्टर हैं. बट यू नो व्हाट, in the trend of attaining new data, in the trend of gaining new information, what we do, we ignore and look upon these writers ऊपर से. किन राइटर्स की मैं बात कर रही हूँ? विलियम शेक्सपियर, जॉफ्रे चॉसर, जॉन मिल्टन. इन राइटर्स को हम रेडिली इग्नोर कर देते हैं, जानते हुए मानते हुए कि हमें इनके बारे में सब पता ही तो है. बट आई टेल यू वन थिंग हियर, जब आप एग्जाम में इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो यू फील लाइक अरे आता तो था, आ नहीं रहा. आपसे शेक्सपियर से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपने ही कभी नहीं सुना होता, और सुना होता है तो आप भूल चुके होते हैं. तो आज इस महा रिवीजन वीडियो का नेम महा रिवीजन इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम शेक्सपियर से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड हर चीज को टच अपॉन करेंगे. And I tell you, this is the part one of what the task I have taken over my shoulders. William Shakespeare is important, very important for upcoming HPSC PGT. He is important for NTA net. बेस है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, हमारी कॉमेडीज का, हमारे प्लेस का. And he is the base of our LT grade exam also. आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं शेक्सपियर की अंडरस्टैंडिंग के बिना. रेनेसॉन्स, क्वीन एलिजाबेथ की एज भी इनकम्प्लीट है. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन विलियम शेक्सपियर. William Shakespeare, as we all know, is an English playwright, English poet, sonneteer, an actor himself. He was drawn to acting and later to writings. And later on to writings. First of all, he entered the literary zone as an actor, acting in Ben Jonson's Every Man in His Humor. And once he joined the company, the acting company, he was drifted to writing. अब मेरी डिस्कशन क्या रहेगी? विलियम शेक्सपियर को मैं किस तरीके से हैंडल करूंगी? आई टेल यू, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन में हम टेक अकाउंट करेंगे उनकी लाइफ, उनके करियर, उनका क्रिटिकल रिसेप्शन और पीवाईक्यू. और ये सब कुछ एक वीडियो में करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. And as a result of which, I have divided these videos in two parts. आज के लाइव स्ट्रीम में शेक्सपियर की बात करेंगे, शेक्सपियर की लाइफ की बात करेंगे, शेक्सपियर के करियर की बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की, क्रिटिकल रिसेप्शन की एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे. Shakespeare, as we all know, is a subject in itself that cannot be ignored. शेक्सपियर अपने आप में एक सब्जेक्ट है. शेक्सपियर की राइटिंग्स अपने आप में एक सब्जेक्ट फॉर्म करती हैं. So without much ado, let us get into the structured way with which Shakespeare's life should be understood, and the most important things you must know about the hero of today, that is William Shakespeare.
हमारा लेक्चर मैंने जैसे बताया विलियम शेक्सपियर की लाइफ पर रहेगा, आफ्टर दैट करियर पर रहेगा, क्रिटिकल रिसेप्शन पर रहेगा और पीवाईक्यू पर रहेगा। तो इन टोटालिटी हम विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट कर लेंगे और क्रिटिकल रिसेप्शन में हम बात करेंगे मॉडर्न एनालिसिस ऑफ शेक्सपियरियन राइटिंग की। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक कंप्लीट होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ राइटर तभी अटेन कर सकते हैं जब हम उनका क्रिटिकल रिसेप्शन पढ़ें, उनकी मॉडर्न डे इंपॉर्टेंस को पढ़ें। कहने में दो राहें नहीं है दैट विलियम शेक्सपियर आज भी उतने ही यूनिवर्सल है जितने अपने टाइम पर थे। तो इसीलिए विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए उनकी बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, and Avon is the name of a river, and it is in the Warwickshire, just 10 kilometers away from London. He was born on 23rd of April 1564 and he passed away on the same date, 23rd April 1616. And in this span, he created such eminent literary writings जिन्हें आज तक हम सब्जेक्ट मान रहे हैं। 23rd April 1564 up till 1616. He attended local grammar school, King's New School, and he married Anne Hathaway. She's senior to him, and she belonged to the town of Shortry. Very important detail. He had 3 children, Susanna, Judith, and Hamnet. Judith and Hamnet, they were twins. But Hamnet passed away early in his life. And as a result of which, some say this thing that Hamlet, the tragic, the most lengthy tragic play that is full of soliloquies and monologues, is written to commemorate, to handle the pain that he had after he lost his only son, Hamlet. Hamlet, Hamlet. So you can now, one of the reasons is behind Hamlet is Hamnet, the death of Hamlet. Now, let us start his career now. Not career, but early career. That is included in the section of life only. So, William Shakespeare, I tell you, was an actor first. He acted in Ben Jonson's play Every Man in His Humor. And as he joined the acting companies, Lord Chamberlain's Man or the King's Men, he was drifted towards writing his own plays. He had good ideas, universal ideas, because he was already associated with the theater. He joined playwriting. He started writing plays in order to earn wealth. And उस wealth ने उनको कितना wealthy बनाया? It is everywhere known. Why we are reading him? Because he dared to start. He tried his hand in writing. And when he started writing, he was able to gain, he was able to do shareholding in the theaters in which he worked as an actor. The Globe Theatre, English society का सबसे बड़ा, and that Globe Theatre is like a donut. It's like in circular motion. In center, the actors play, and in the galleries, people sit who can afford going to the theater. And you know what? Shakespeare was indeed one of the shareholders, eminent, important, paise wala shareholder in the Globe. He was able to become. And all because of his writing habit, all because of his literary writings, he was able to obtain this stature. So all these things are associated with Shakespeare as an actor. I tell you, Maha revision चल रही है तो हर detail यहाँ पर कहने को important है.
He was associated with Lord Chamberlain's men, the King's Men. These are the theaters of 1580s. These are the acting troops of 1580s. King's Men. These King's Men performed highly reputed theatrical troupe था, acting troupe था, जो perform करता था किसके लिए? किंग के लिए, किंग जेम्स के लिए. क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर जितना प्ले राइट्स प्लेज इंपॉर्टेंट है, ड्रामा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स का होना, थिएटर का होना हमारा जेकोबियन पीरियड में भी है. Even the writings of Shakespeare, they belong to both the ages, the Elizabethans and the Jacobeans. And his master plays rather are written in the Jacobean age. एक एज की अंडरस्टैंडिंग होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. The age in which Shakespeare was writing was very flourishing, was very eminent when it came to the writers, the sonneteers, the playwrights, poets, everybody who knew how to use the art of their pen could get good pension. But Shakespeare, he moved to London. There he started his acting career, writing career, and he was able to relocate himself to London and brought shares in many, many important theatrical theaters, I should say. He was associated with the King's Men, the Globe, and the Blackfriars also. Now talking about his literary beginning. बिगनिंग कहां से हुई? जब पेन उठा लिया, बिगनिंग वहीं से हो गई. लेकिन लिटरेरी बिगनिंग कहां से हुई? क्या मैंने कहा कि शेक्सपियर स्कूल गए थे? तो मैंने कहा. क्या मैंने ये कहा कि शेक्सपियर यूनिवर्सिटी गए थे? नो, he did not attend any university, and as a result of which he did not attend any university, but in his writings he equaled university wits. Who are university wits? University wits are a group of 7 to 8 scholars who belong to University of Oxford or University of Cambridge, and they wrote plays. अब plays कहाँ से आए? Plays आए मिस्ट्री प्लेस से, मिराकल प्लेस से, मोरालिटी प्लेस से, और ये आए हमारे यहाँ पर सेकुलर प्लेस में, जिसमें कॉमेडी के लिए तो प्लैटर्स और टेरेंस को यूज किया जाता था, सोर्स. ट्रेजेडी के लिए यूज किया जाता था सेनेका को. एंड नाउ व्हेन विलियम शेक्सपियर स्टार्टेड राइटिंग, यूनिवर्सिटी विट्स के इक्वल आ गया. ना कैम्ब्रिज गया, ना ऑक्सफोर्ड गया, लेकिन इक्वल आया. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच रॉबर्ट ग्रीन, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, went green with jealousy. He wrote a very, very wide pamphlet in which the first allusion to Shakespeare is there. Robert Greene was jealous because of the growing popularity of William Shakespeare. He wrote his pamphlet, The Groat's Worth of Wit. And in that pamphlet, he says, Shakespeare thinks in his own conceit that he is the only Shake seen in the country. ये भी बोला. और क्या बोला? That Shakespeare is an upstart crow beautified by our feathers. He's an upstart crow. So this is the first literary allusion of William Shakespeare, wherein Robert Greene, out of jealousy, attacked William Shakespeare in his pamphlet, The Groat's Worth of Wit, and that came out in the year 1590s, when Shakespeare has just started writing and his plays are just being performed. Now, that's what I have told so far. I tell you, everybody, very, very important detail in terms of HPSC PGT. क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है, इतनी डिटेल आपके पास होनी चाहिए. रॉबर्ट ग्रीन का पेम्फलेट है ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट. This is the first time that Shakespeare was being talked about, was being alluded to, and he is considered as an upstart crow beautified by feathers.
and in his own conceit, the only shake seen in a country. Is that okay? Now, let us come to our discussion of Shakespeare's career. This is the second aspect of this lecture. So far, we have seen that how far he has come. In his career, he has written plays, he has written poems, he has written sonnets. And his literary career as an actor also was very flourishing. He got a chance to perform in Every Man in His Humor, very important play written by Ben Jonson, his contemporary. And in his career, he has written plays, he has written poems, and he has written sonnets. Plays are 37 in number, poems are 2 in number, and sonnets are 154 in number. Isn't that a good number? Very good number. And let us talk about sonnets. Sonnets during the time of Renaissance was very important genre of writing poetry. Sonnets is basically a poem of 14 lines जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जिस टाइम शेक्सपियर सोनेट लिखते थे उस वक्त टू टाइप के सोनेट्स पॉपुलर थे. पहला था ऑक्टेव एंड सेस्टेट 8 and 6 14 और एक था 4 plus 4 plus 4 plus 2. These are the 3 quatrains of 4 lines and 1 couplet of 2 lines. Another very important. If you're liking the way I'm taking up this revision in a methodological way, I'm pointing out something. I request you people to like this video, share this video. Since we are completely dedicating this video to the revision series that you must do, the revision that you must do for HPSC, PGT, for NTA NET, you need to have such basic understanding of the canonical writers. 3 quatrains and a कपलेट, ये हो गया हमारा एक तरीके का. तो सोनेट्स जो थे वो याट एंड सरे के थ्रू स्टार्ट हुए थे इंग्लिश में, एंड याट एंड सरे दे published their sonnets in Tottel's Miscellany, and after that Spenser started writing, Sidney started writing, and when the theatres closed due to the plague in London, Shakespeare tried his hand at writing sonnets, and they are equally popular today. Shall I compare thee to a summer's day? Such an important sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? Next is poems. अभी sonnets की बात हम फिर से करेंगे जब हम शेक्सपियर के sonnets पर आएंगे. Poems. He has basically written 3 poems. Ideally, that is considered to be 3 poems: Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, and The Phoenix and the Turtle. Venus and Adonis came out in the year 1593. Rape of Lucretia came in 1594. The Phoenix and Turtle, that's an allegorical poem about 2 doves who are in love with each other. Now they have passed away. That's a funeral song. And you know what? Both these poems and a number of sonnets are dedicated to Henry Rithlosses. He is an Earl of Southampton. इस पर्सन को आप एक यंग मैन मान सकते हैं जिससे शेक्सपियर रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे, अट्रैक्टेड थे. यस, विलियम शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी पर भी क्वेश्चन है. that becomes very much clear in his sonnets. So William Shakespeare has written, as I told you, 154 sonnets, and out of these 154 sonnets,
126 sonnets are dedicated to a youth, a fair youth, जिसमें बार बार ये रेफरेंस आती है और जिसमें हम अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन का इनिशियल्स देख सकते हैं। उसके बाद 26 आर डेडिकेटेड टू अ सॉरी 26 are dedicated to a dark lady, right? And 2 are dedicated to Cupid. तो ये sonnets 126, 26 and 2 becomes 154. तो शेक्सपियर के 126 sonnets they are dedicated to a fair youth, specifically Earl of Southampton, that leads to modern questioning of his sexuality. And the other are dedicated to a dark lady, Mary Fitton, somewhere it is written, and whereas the last two are dedicated to Cupid. This is how structure से विलियम शेक्सपियर को अगर आप समझ लेते हैं, no matter what, शेक्सपियर complete हो जाएगा. Now, let us come to his plays. These are the markers I've created because Shakespeare, I told you, is a subject. उन्हें पढ़ाना जितना मुश्किल है, उनके लिए पढ़ना भी उतना मुश्किल है. So because there is so much information, we need to have these yardsticks like pointers ready अपने lecture के लिए. So now we have the plays. We have the plays of William Shakespeare. We have discussed the name of his poems. We have discussed the bifurcation of sonnets, and now we are going to discuss the heavy load, his plays. William Shakespeare's plays are divided across tragedies, bloodshed, revenge, comedies, Roman plays, historical plays, and last one can be asked in exam this time, romances. And these are not romantic in the actual sense of the word. अब ये किस तरीके के रोमांस है इसे हम जरूर देखेंगे. आज के वीडियो में हम किसे कवर करेंगे? कॉमेडीज को, रोमन को, हिस्टोरिकल एंड रोमांसेस को. ट्रेजेडीज I'll keep them for another video, for the next video, the part 2, in which भाई साहब हम इनकी tragedies भी करेंगे, in which we will take up the PYQ session of William Shakespeare, in which we will take up the critical reception of William Shakespeare. Revision ऐसे ही करनी है आप लोगों को. और इस वीडियो का आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, प्रोस्यूमली विद अ कप ऑफ कॉफी और टी. एक बार इस वीडियो को व्यू कर लीजिए लास्ट तक. आई टेल यू, नोबडी विल बी एबल टू चैलेंज योर रिवीजन, क्योंकि whatever things I am taking up in this video, in this lecture, are important from every angle of William Shakespeare. So ये रिवीजन बहुत जरूरी है. सी नेक्स्ट वी हैव हिज, मैंने कहा कि हम रोमन प्लेस को पहले टेकअप कर लेते हैं. रोमन हिस्टोरिकल कॉमेडीज को आज खत्म करेंगे. अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रेजेडी की, क्रिटिकल रिसेप्शन की और पीवाईक्यूज की. इसके रोमन प्लेस कौन से हैं? रोमन प्लेस क्या होते हैं? रोमन प्लेस आर बेसिकली, वेट, आई थिंक the discussion remains incomplete without my alluding to the sources of his plays. See, I think I have missed that slide. सी, क्योंकि अगर वो मिस हो गया है तो एक बार हम सोर्सेस को रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, शेक्सपियर के मैंने आपको बताया कि प्लेज ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमन प्लेज और हिस्टोरिकल प्लेज में डिवाइडेड है. तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, जो उनके ट्रेजेडीज हैं वो इंस्पायर्ड है सेनेका से.
सेनेका में ब्लडशेड होता है, रिवेंज होता है, मर्डर होता है, इंट्रीग होता है। कॉमेडी उनकी इंस्पायर्ड है प्लेटस एंड टेरेंस से, और रोमन प्लेस उनके इंस्पायर्ड है, हिस्टोरिकल प्लेस उनके इंस्पायर्ड है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स से। हिस्टोरिकल प्लेस रफेल हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड उससे इंस्पायर्ड है। वेयर एज रोमन प्लेस उनके इंस्पायर्ड है, मैं बता देती हूं, रोमन प्लेस उनके इंस्पायर्ड है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। याद रखना, हिस्टोरिकल प्लेस विलियम शेक्सपियर के डिराइव्ड है हॉलिनशेड के क्रॉनिकल से। रोमन प्लेस उन्होंने डिराइव की है इंस्पिरेशन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ से। अपने ट्रेजेडी के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन ली है सेनेका से, और कॉमेडी के लिए इंस्पिरेशन उन्होंने ली है प्लेटस एंड टेरेंस की राइटिंग से। आई होप आप क्लियरली फॉलो कर पा रहे हैं व्हाटसोएवर आई एम टीचिंग, आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नाउ इनके रोमन प्लेस कौन से हैं? हिज रोमन प्लेस आर 3 इन नंबर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वी हैव जूलियस सीजर, we have Antony and Cleopatra, and we have Coriolanus. These are the Roman plays. And why they are Roman plays? They are Roman plays because they are set in the authentic Rome city. The characters are drawn for Rome, the stories are drawn from Rome, and they are very, very important. Can you miss Julius Caesar? When you know Julius Caesar is prescribed in class 10 CBSE syllabi, it was. And Julius Caesar, Antony, Mark Antony's speech, Calpurnia's visions and visions. She fears that something bad or ill is going to fall on my husband today. The tigress is yelping. So much intricacies are there. And Roman plays, they are dedicated to the authentic rulers of Rome. Antony and Cleopatra has been taken up by John Dryden also in his writings, in his play, All for Love. All for Love is completely based, it's a tragedy, it is based upon Antony and Cleopatra, written by William Shakespeare. That's a Roman story. And third, we have Coriolanus, another important Roman play. Roman plays लिखने की inspiration कहाँ से ली है? इन्होंने ली है North's translation of Plutarch's Parallel Lives. Is that okay? Roman plays समझ में आ गए? अब कुछ जगह पर आपको क्या मिलता है कि Titus Andronicus, that's a tragedy, is also a Roman play, but that's not. Titus Andronicus is set in the illusionary Rome, the fictional Rome, not the authentic Rome. So Titus Andronicus को इसमें include नहीं करना है. Julius Caesar, Antony and Cleopatra and Coriolanus को ही इसमें include करना है. Next we have is the history plays written by William Shakespeare. हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड से इंस्पायर होकर, यू नो व्हाट, आई टेल यू वन थिंग, विलियम शेक्सपियर रोट हिस्ट्री प्लेस थ्रूआउट हिज लाइफ, एंड व्हेन आई से दिस थिंग आई मीन इट. At intervals, if you see the writings of William Shakespeare, you will see that Shakespeare has completely written
हिस्ट्री इज ऑल हिज लाइफ। उनके 37 प्लेस में से अगर आप इंटरवल्स निकालें, हर जगह आपको हिस्ट्री प्लेस मिलेंगे। एंड हिस्ट्री प्लेस दे आर 10 इन नंबर, तो मेजर नंबर ले जाते हैं 37 में से। एंड हिज हिस्ट्री प्लेस आर डिवाइडेड इनटू टेट्रोलॉजीज। कैसे? मेजर टेट्रोलॉजी, माइनर टेट्रोलॉजी। मेजर टेट्रोलॉजी है यहाँ पर रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ in two parts. Henry V, he is the most ideal king of William Shakespeare. Whereas his minor tetralogy deals with Henry VI, three parts. Richard III, he is the most villainous king. तो 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए मेजर वाले, 3 and 4 ये हो गए। तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 हिस्टोरिकल प्लेस तो ये हो गए। नाउ अनदर 2 प्लेस, क्योंकि 10 हिस्ट्री प्लेस है, किंग जॉन एंड हेनरी एट, ये भी मेजर प्लेस है विलियम शेक्सपियर के। तो ये जो हमारी माइनर टेट्रोलॉजी के राइटर्स है, माइनर टेट्रोलॉजी के जो किंग्स है, दीज आर द किंग्स ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस, द वॉर दैट वाज fought, the war that was fought between the House of Lancasters and the House of Yorkists. And Yorkists, they represented the white rose, and Lancasters, they represented the red rose. This is all about his history plays. हिस्ट्री प्लेस हो गए आपके, नंबर नोट कर लीजिए। कंप्लीट 10 है, सारे नेम्स बता दिए हैं हमने। रोमन प्लेस 3 है, कंप्लीट बता दिए हैं। अब चैलेंज स्टार्ट होता है हमारा कॉमेडीज से। हिज कॉमेडीज, अब आप कहेंगे नेहा मैम आपने प्लेस तो बता दिए लेकिन लिस्ट नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर प्लेस का जिस तरीके से हमने बाइफरकेशन किया है वो इसीलिए ही किया है ताकि हर स्टूडेंट एक बार अच्छे से देख ले कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस का क्या डिवीजन है, क्या स्ट्रक्चर है। ये है हमारा एनालिसिस ऑफ कंप्लीट प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये देखिए, ये कंप्लीट प्लेस है विलियम शेक्सपियर के, क्रोनोलॉजिकली अलाइन है, इसमें सब है, हिस्ट्री है, कॉमेडी है, रोमन है, ट्रेजेडी है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये लिस्ट आपके पास अब तक जरूर से जरूर होनी चाहिए। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिज कॉमेडीज। His comedies, I tell you, they are divided into comedies. कॉमेडी क्या होती है? प्लैटस एंड टेरेंस पर बेस कर लिखते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, यू सी mirth, laughter, प्लॉट्स पे प्लॉट्स, प्लॉट्स पे सब प्लॉट्स, प्लॉट कंस्ट्रक्शन इंट्रिकेट होती है। लेकिन पहले बात करते हैं उनकी अर्ली कॉमेडीज की। William Shakespeare started writing his early comedies from 1519 or 90s onwards. And these are his early comedies: Love, Labour's Lost, Two Gentlemen of Verona, and Comedy of Errors. Why they are titled as early comedies? Because these are not mature comedies. They are not well knit. The plot is not original. There is slapsticks. There is confusion. एक पॉलिश्ड एंडिंग नहीं है, पॉलिश्ड लाफ्टर नहीं है, फार्शियल एलिमेंट्स लगते हैं। ये सब चीजें हेल्प करेंगी आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट में। इस तरीके से अगर आप अपनी आइडियोलॉजी बना करके चलेंगे तभी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। उस तरीके की स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। शेक्सपियर की कॉमेडीज में ये लिख करके आ जाना कि सिर्फ उनकी कॉमेडी है, लास्ट में कॉमेडी है, एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है, जरूरी नहीं है। यू नीड टू हैव सच फॉर्म ऑफ नॉलेज विद योरसेल्फ। लव लेबर्स लॉस्ट, the king of Navarre, along with his attendant, decides to maintain celibacy, decides that he will not marry, but at the end falls in love with the Queen of France. Comedy. Second is Two Gentlemen of Verona.
थर्ड इज कॉमेडी ऑफ एरर. कॉमेडी ऑफ एरर के बारे में मैं बता दूं, इट इज अ शॉर्टेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर that deals with Antipholus, Syracuse, and Ephesus. And these two are twins. Even their servants are twins. So there is much slapstick, much confusion. But at the end of the day, the elements, they seem partial, partial, forced ending, forced laughter. Now let us talk about the mature comedies written by William Shakespeare. These are truly mature. Shakespeare was now well versed with the art of writing plays. He could now match tragedy and comedy. जैसे इन भाई साहब ने ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को मैच किया है, एरिस्टोटल को फॉलो नहीं किया. एरिस्टोटल का पोएटिक्स कहता है देयर शुड बी थ्री यूनिटीज इन अ वर्क: यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. शेक्सपियर में यूनिटी ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है. मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसानियो 3 months का टाइम मांगता है 3000 ड्यूकेट्स को रीपे करने के लिए. यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं है. हम कभी बेलमोंट जा रहे हैं, कभी वेनिस जा रहे हैं. देयर इज शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेस. यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं है. बट यस, इन हिज मैच्योर कॉमेडीज वी डू सी यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन जरूर से जरूर है इनके प्लेस पे. देयर आर सो मेनी सब प्लॉट्स एंड हाउ दे आर ब्यूटिफुली ब्रॉट टुगेदर. इन मिडसमर नाइट ड्रीम वी कैन सी दैट किंग थीसिस इज गोइंग टू मैरी क्वीन हिप्पोलिटा. उनका नप्टियल आर है, नप्टियल वेडिंग डे है, वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है थीसिस एंड हिप्पोलिटा की. And at the same time, we have Oberon and Titania. These are the king and queen of fairies. Fairies के king and queen है. Oberon and Titania, they are quarreling with each other. Husband wife की fight वो चल रही है. And we have Lysander and Hermia. Both of them are very much in love with each other. Want to get married, but Hermia's father is more favorable of Demetrius. Hermia's friend Helena, she loves Demetrius, but Demetrius loves Hermia. There's a love triangle that is going on. A midsummer's night dream. It's a festival. It's a day celebrated on 23rd of June. That's a midsummer day. And whereas our king and queen are going to get married, and all that is going on is during the nuptial ceremonies, the upcoming wedding of the Amazonian queen Hippolyta and Theseus. Whereas there are 6 artisans who are preparing and practicing the play Pyramus and Thisbe for the wedding, and the play turns out to be a complete blunder. And another blunder of the play is Puck, Robin Goodfellow, who has that love potion who he pours in the eyes. Titania falls in love with one of the artisans. There is so much confusion, but at the end, everything is well clear. This is all about his mature comedies. His mature comedies, as you can see by now, that they are mature. They are well lit. Even if there are 1, 2, 3, 4, 5 plots going on, all is well in the end. Tragicomedy इनका एक complete अच्छा genre है इनकी mature comedies का. Then we have Much Ado About Nothing. Are we doing Much Ado About Nothing? No. It's a Maha revision that is going on for the god of English literature, William Shakespeare, जिसने खुद कहा कि अरे मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा जितना मुझे कहा गया कि विलियम शेक्सपियर ने कहा आज तक. तो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, मास्टर प्ले है मच अडू अबाउट नथिंग. That there is a man hater, there is a woman hater. Both of them get married in the end.
Beatrice and Benedict. And then we have another very important play, Twelfth Night. एंड ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है, पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट यू विल. ट्वेल्थ नाइट्स character, there is one character that you should keep in mind, that is Melviolo. Twelfth Night is all about the story of Duke Orsino, Countess Olivia, Viola, and Sebastian, who becomes Page Cesario. She becomes Viola and Sebastian, they're twins. Duke Orsino loves Cesario for the kind of personality he has, hinting towards his sexuality, gender fluidity. He adores Cesario as a man. Countess Olivia, she loves Cesario for the cute page he is. But at the end, he is not he, but who is he? He is she, Viola. Viola loves Duke Orsino, but delivers letters of Duke Orsino to Countess Olivia. And at the end, everything is resolved. Countess Olivia marries Viola's twin Sebastian, thinking face to same ही है. Duke Orsino marries Viola, and Cesario is nowhere to be seen. It is such a beautiful play. You must read it once you are done with your screening test. We have a lot list of his mature comedies. We have Taming of the Shrew. We have Merchant of Venice. We have Merry Wives of Windsor, written at the request of Queen Elizabeth herself. And the character she most loved was the character of Falstaff. As You Like It, The Story of Rosalind. These are the mature comedies. Now we have the dark comedies. And I'll conclude the lecture with romances. What are dark comedies? Dark comedies, आप ध्यान रख लीजिए, these are the problem plays. They aim to talk about some problem. These are problem plays. These are satiric in tone. These are comicals, as the title says, but they are way more dark. Mature से जब एक person old age की तरफ बढ़ने लगता है, वो जो एक love in the air होता है, that goes away. And as a result of which, dark comedies, reality of life, problems of life, जिस पे जिस स्टेज पर अब हम सब हैं. All's well that ends well. You need to listen to this philosophy and you need to abide by it. All's well that ends well. Measure for measure. Troilus and Cresside. Gender fluidity, gender flexibility. Portia का मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का खुद को डिस्गाइज करके एक लॉयर बन जाना और अपने सून टू बी हस्बैंड को सेव करना कोर्ट रूम ट्रायल रूम सीन में. जेंडर एम्बिग्विटी. वायोला का डिस्गाइज करना, जेंडर एम्बिग्विटी. बट यू नो व्हाट, इन दीज मैच्योर कॉमेडीज वुमेन आर पावरफुल. वी हैव पोर्शिया, वी हैव हिप्पोलिटा, इवन टाइटेनिया इज अ पावरफुल फेरी. Hermia and Helena, they're decisive of their choices. So, be in the play Much Ado About Nothing, she's a man hater, but she has some reasons too. These are some intelligent, confident women. And as has been said, Shakespeare has no heroes but heroines. And that is much more evident in his mature comedies. Dark comedies, 3 in number. Roman plays, 3 in number. History plays, 10 in numbers. And last but not the least, romances written by William Shakespeare. अब भाई साहब ये क्या है? Romances are basically
The plays written by William Shakespeare that talk about family reunion, that talk about recognition. There is paganism in that, but all the more there is recognition in the end. And you know what? These romances are neither comedies nor tragedies. ना तो हमें अच्छा लगता है एंड में, ना ही हमें बुरा लगता है. हमें लगता है कि अंत भला तो सब भला. सो रोमांसेस इनको किसने कैटेगराइज किया? कैटेगराइज किया एडवर्ड डाउडन ने अपने ऐसे वर्क शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट. And his romances even are five in number, that are Cymbeline, Pericles, The Winter's Tale, Tempest, his last play, and Two Noble Kinsmen, that is based upon Chaucer's Knight's Tale. पर टू नोबल्स किंग्समैन बेस्ड है. So now, after so much of overview of Shakespeare as a writer, I come to the end of this video. As I've told you that this is just the part 1. We will soon be coming up with a part 2, revising all the important PYQs of William Shakespeare, his modern critical reception. That is also very important in every sense of the word. So with that, I come to the end of this video. I wish you all the very best. Last 10 days are left. HPSC PGT के students उठ जाओ, revise करो, practice करो, PYQs की practice करो. This is Dr. Neha signing off for today. Have a nice day and good luck as you prepare.